How are you, sir? Ji, Sir, how are you? I am fine, thank you. Okay, sir. Sir, would I know who is presenting today? Ji, Would I know who is presenting today? Kumari Bharti, are you going to present? Yes, sir. Yes, sir, I'm also. Yes. So, how many presentations you have still to present, Kumari Bharti? Sir, one. One on tourism, as you were telling. Yes, sir. So then please go ahead with your presentation. Okay, sir. Sir, if there is any possibility to present the presentation with their PPT. Ji. Planning in tourism. Introduction. Tourism planning is the process leading to tourism development, as it is through the planning process that the set development goals are achieved. Tourism development, on the other hand, is broader term which incorporate the planning, tourism infrastructure, management of tourism attraction, facilities, accommodation, and transport service. Tourism planning is a continuous and long-term process of preparing a destination attractiveness for the tourist. It is an ordered sequence of operations designed to lead to the achievement of either a single goal or to a balance between several goals. Importance of tourism planning. Establishing the overall tourism development objective and policies. Developing tourism that its natural and cultural conserved for future. Integrating tourism into the overall development policies, providing a rational basis for decision making by both the public and private sector on tourism development, making possible the coordinated development of all the many elements factor that is 5 A's. Approaches to tourism planning. Continuous and flexible approach. Planning should be done with continuous monitoring and feedback on previous development and evaluation of new trend. Second is system approach. Tourism is viewed as an interrelated system and should be planned as such, utilizing system analyzing techniques. Third is comprehensive approach. All aspects of tourism development, including its institutional elements and environmental and social economic implications, are analyzed and planned comprehensively. Next is integrated approach. It is planned and developed as an integrated system within itself and also is integrated into the overall plan and total development patterns of the area. Next is environmental and sustainable approach. Tourism is planned, managed, and developed in such a manner that its natural, cultural,
resources are not depleted or degraded, but maintained as viable resource on a permanent basis for continuous future use. Next is community approach. There is a maximum involvement of the local community in the planning and decisions making process of tourism, and there is maximum community participation in the actual development and management of tourism and its social economic benefits. Implementable approach. Tourism development policy, plan and recommendation are formulated to be realistic and implementable, and the techniques of the implementation are considered throughout the policy and plan formulation, with the implementation technique specifically identified. Now, level of tourism planning. Individual level, firm level, industrial level, economy as a whole, state level, national level, regional level. Now, types of tourism planning. First is spatial tourism planning. In this type of tourism planning, the space as well as the environment of the tourist spot is scrutinized for creating good quality infrastructure and quantities at that spot. Example, Corbett National Park. Second is sectorial tourism planning. In this type of planning, the region to be developed is divided into various broad sections. सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, एकदम आ रही है आवाज जी. Okay, sir. This sector are allocated resources. Their social, economic, and environmental needs are assessed. The natural resource of each sector must be preserved and protected. These sectors must also coordinate with one another to achieve tourism synergy. Example, Southeast Asia is a popular tourism sector of the world. Next is integrated tourism planning. In this type of planning, the sector or parts of tourist region are integrated. Example, tourist spot like Lucerne, Mount Kitz, Geneva. Next is complex tourism planning. When several regions are considered for the purpose of planning, it is called complex tourism planning. These regions may be located far away from another. These have to be developed on comprehensive basis because the international tourist may be keen to visit all the tourist spots located in this region. Example, Char Dham Yatra. Centralized tourism planning. This type of planning is done by a single authority, usually the state or central government. Example, Red Fort. Renovation of the Red Fort for exposing more areas of its premises to tourists. Next is decentralized tourism planning. The parties who are keen to develop a tourist spot planning the excursion of the activities of the spot. They take the assistance of the government as well as finance from the local, regional or national bank to do so on. Government gives government gives support and money to such firms. Example, the first private airport of India has been developed at Nede Musri, Kerala. Last one is
urban and rural tourism planning. This is a new concept in tourism planning. In urban planning, the emphasis is creation of modern infrastructure, luxurious spot. Rural tourism planning. In this tourism planning, which is based on activities of agrarian with touristic side activities. It became a rage during last decade of the 90s. Now, tourism planning process. There are several processes or analysis of a plan for tourism development. It is very important that these processes are properly adhered to. The description of these planning process as given here can only be briefly indicative and limited to mere suggestion of the topics or steps without entering into detailed analysis. Any plan must take into account these processes if it is to attain objective in the given period of time. The main steps or phases in the tourism planning process. Assessment of tourist demand and supply, establishing objective, territorial planning, basic infrastructure, financial planning, human resource planning, administrative structure, marketing and promotion, monitoring progress, time factor. Now I conclude. Careful planning is prerequisite for success of any program. The haphazard development in many countries had made the planners aware of the need for planning of tourism development based on scientific research. Planning is an intellectual process, the conscious determination of courses of action, the basing of decision on purpose, fact, considered estimates. It is concerned with anticipating and regulating change in a system to promote orderly development so as to increase the social, economic, and environmental benefits of the development process. It is an intellectual process in which creativity, thinking, and imagination are essential. Thank you. It was very excellent presentation, Kumari Bharti. You did well. May I ask you one or two questions? Yes, sir. Are you ready to answer? Yes, sir. I will try. You are from Dhanbad, if I am not incorrect. Are you from Dhanbad? No, sir. Bokaro. From Bokaro, yes. So, would you like to say something, some sentences about the tourist potential of Bokaro? Tell the historical emergence of Bokaro, and then you point out, suppose you have to invite someone to visit Bokaro, what Yes, sir. some points are there in Bokaro places where you would like someone visiting Bokaro to visit that place from the viewpoint of a tourist potential of Bokaro. So then please start. Sir, first is Rajrappa. Or second Parasnath, or new Ram Raj Mandir in Dhanbad, near Dharmad. ये सब places हैं. Would you like someone to visit Bokaro steel plant also? Yes, sir. Damodar Valley. Yes. So it's very good. You prepared the assignment. Yes, on sir. the basis of which books you prepared. You should have mentioned the references. You know what I'm saying?
Yes, sir. Whenever someone presents a research paper, an assignment is a sort of research paper. Okay, When sir. you present a research paper, then you should also mention the sources from where you have developed it. I should just say and appreciate that you have presented a very good presentation. You did a very excellent presentation. But this thing you should keep in mind that whenever you write a paper, a research paper or assignment, then you should also be telling about the sources. Now I'm asking you, can you Yes, tell sir. me some sources about whatever you presented, from where you developed your paper? Sir, from internet. Okay, so only one source you used or different sources on internet? Different sources. So that's very good. You could have just in the very end marked the links from where you just prepared the note. Okay, sir. Next time. So this is the a little bit lacuna in your presentation. Overall, you did a good presentation. So Okay, sir. I should Thank you, sir. congratulate you for your good presentation and appreciate that you labored hard and did your presentation. Thank you, sir. Now I invite Juhi Maurya to kindly come up. Hey, Rahne, hey. To please present Juhi. Are you Sir. going to present your Yes, paper? sir. Yeah? Then please go ahead with your presentation. First tell the title and then go ahead with your presentation. Okay, sir. Good afternoon, everyone. I'm going to present the paper 4. The paper name is Heritage Museum and Management, and my topic is museum building. Museum building. A museum is a non-profit permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study, and enjoyment. The basic requirement of a museum are a good environment, building style, and various provisional amenity for a well-functioning of a museum. A modern museum is a public institution where our cultural heritage is preserved for posterity while entertaining the present generation for the improvement of knowledge. Checklist for the selection of the site for a museum building. First, whether the environment for the site falls under the following, just like industrial area, irrigation land, residential land, busy traffic area, railway line, airport, school playground, or accessible or not. Second point is whether the site is low-lying one, and third one is whether it is on a high raised land or whether it is on the bank of river, whether the site is near a water irrigation or tank, whether the site is on the seashore, whether the site is cyclone hit zone, whether the site is a water stagnant area during a rainy season, whether large area is available for construction or not, is it a remote location, whether a police station is located nearby or not, whether the water table is high or whether the water is potable or not, whether the soil is good for landscaping and gardening, etc., whether the area is approved for construction of building, whether there is any plan for a development of the area,
whether the land is transferred for the purpose of the construction of the museum. Main requirements of museum. The requirement of the museum. First requirement of location or site. Selection of a site for museum to construct its building is very important. The site should be independent so that further expansion for a museum is feasible at a later stage. It should be centrally located and should be easily accessible to the visitor. It should not lay in a flood plain or where there frequent threat for flooding. Second is environment. A museum must have a favorable environment suitable for the object and the visitors. A well laid out of garden and pleasant looking surroundings will add to the authentic looks of the place. Next one is building. A museum building may either be a heritage building purposed to house a museum for purpose built for a museum. A museum building was thought to be imposing monumental symbols of culture. It was thought that they had to have ornamental exterior, domes, minarets, large windows and arches, thick walls, etc. However, in recent times, the museum architecture is considered to be more functional than symbolic, and whatever ornamentation is part of the design to not at the cost of its purpose or functional uses. The museum architecture today is a combined effort wherein the museum authorities have to clearly visualize the specific requirements of a museum according to a nature of collection, programs and activity to be undertaken and transfer the idea of the architect for a judicious and well planned execution. Area of the museum building can be broadly divided into two categories. First is public area and second is service area or technical area. The public area is accessible to the public it includes foyers, galleries, auditorium, lecture room, library, cafe, museum, shop, body changing room, clock room, toilets, information desk, conference room, activity rooms and workshops, escalator, stairs, garden, parking area, etc. Planning the public area, art clubs, lifts. Museum is a public institution and is frequented by visitors. It is better to have compound wall for security with limited number of entry and exit points. Foyers. It is the entrance hall in the museum. It should be large enough to allow large crowds and should lead to the information desk, ticket counter, auditorium, library, lecture room, cafe, museum, shop, guide room, clock room, etc. Through the galleries. The foyer may be have seating arrangements for the visitors. Next one is information tags. It may be kept in the middle of the foyer so that anybody who enters the museum can get assistance at easy side.
The inquiry counter must have intercom facilities so that any official is easily accessible to the visitor in time of need. Next point is ticket counter. Ticket counter should set up at the entrance of the museum. It is located in such a way that a ticket counter is prominent, so as the visitor locates it without any difficulties. The counter should ideally have a ticket issuing machine, provision to ticket the cash collected, and proper security to the cashier. Clock room. They are of two types. First, maintained by the staff, and second, occupy space. Museum shop. The visitor should have sufficient articles on sale, and the nature of their promotion should always be in good taste and be consistent with the museum's academic standpoint. The original object should not be offered for sale, and indeed the merchandise should never be of a nature which could be interpreted as the wherewithal of a genuine antiquity dealer. The museum shop is the outlet for the museum's commercial productions such as scholarly catalogs, temporary exhibitions, catalogs, color reproductions, plaster cast metal cast, rubber cast, plastic cast, fiber cast, general trade books related to the collections, stationery and gifts such as calendars, diaries, address books, marks and puzzles. The art and craft works produced by artisans, CDs, etc. may also be kept on sale. Visitors are interested in talking some sweet memories from the museum. It is better that the museum shop is located at the entrance or at the exit. Next is toilet. Separate toilets should be constructed for both public and staff. It is always better to have a toilet away from the galleries and cafe. If the museum is having a large area, it is better to have the toilet facilities in each floors conventionally, and the location should be known through signboard. Next is guide room. It should also be at the foyer so that they are easily available to the public. The guide room must have provision for keeping books for reference. There should also be provision for sitting arrangements so that teachers who intend to bring their students of a museum visit can sit and discuss. The room may have some reference book, guidebooks, etc. for the use of the guides and the teachers. Library. Museum staff and visiting researchers requires a good internal library. It must have its own stocking area and reading area. The library should have provision to have natural light, particularly for reading. There should be provision so that
staff and public are accessible to the museum library. Next one is cafe. It is an important utility area in museum. It must be accessible to both the staff and public. It should be easily accessible to the public and the visitors. It is good source of generation of funds for the museum. Next one is staircases, lifts and corridors and accelerators. In the case the museum building is a multi-storied one, then the provision for staircases, lifts and corridors are essential. These areas should be relief areas. Large lifts and ramps will be of use to transport the objects into the museum or out of the museum. The lift to be used by visitors should at least to be able to accommodate wheelchairs. Galleries. The constructions of galleries depends on the type and nature of collections and the types of lighting needed for the display for objects. The size of the room and the height of the ceilings depends on the nature and dimension of the object. For small objects which need showcases, the ceilings can be low and the light should be within the cases, separated from the display portion. Larger objects may need to be accompanied in space with height ceilings or outside with special provisions for their display. The galleries should be so designed that the visitor should not find any difficulties in going from the galleries to the others. The galleries should be separated from the technical area. Seminar room. It is an important facility to be provided in a museum. The seminar room is essential for the researchers to share their new findings, to hear lectures, seminar, organize conference or talk by experts and specialists. It should have provision for audio projections, writing board, interview room, sitting visual arrangements for a reasonably large number of people at a time, etc. Auditorium. It has a very important utility in a museum. There may be provision for projection room, rise stage for organizing cultural and other activities, seating arrangements for a suitably large number of persons at a time. Service area and technical area. The service area includes offices for administration and technical staff, workshop, storage, photographic unit, printing unit, computer room, air conditioning plant room, electrical rooms, conservation laboratory, lunch room for staff, clock room for staff, CCTV monitoring area, etc. Planning the technical area. Technical area, the area used by the staff of the museum, which is restricted to the visitors. They include the design and display workshop, different scientific workshops, the
taxidermy rooms, rooms for modeling unit, photographic unit, conservation laboratory, publication wings including the press, the storage machine rooms, area, machine room administration, etc. While planning the area must care should be taken upon the feature taken depending upon the future development. There is no fixed rule of distributing the area available between the public and technical areas. Depending on the nature of the museum collections and the types of activity, the space for each category varies. Publication unit. Museums regularly publish monographs, bulletins, handouts, catalogs, journals, newsletters, books, and labels, etc. Therefore, a fairly large museum will require a printing press. A separate museum is required for the publication unit, machine room, store for new materials and printed matter. Rooms are required for staff who are working in the unit. Administration area. The administration area should be separated from the galleries. It should be nearer to the curatorial area as well as the director's office to make the job easier. Since the dealing with the administration is mostly with the curatorial staff, it should have access to the curatorial area. The director's office should have a provision for a large room for the director, space for the secretary, space for the visitors to sit, and room for the meeting, etc. The administration staff should be provided place in a large hall so that the administration can do the whole administration easily. Public safety. Proper safety guidelines and standards should be followed to ensure the safety of the visitors as well as the staff. Staff of safe plant and system work. Room maintenance per arrangements for dealing with dangerous substance and the provision of adequate information, instructions, training and supervision, safe access and exit, and the maintenance of a good working environment and welfare facilities. In the building itself, provision should be given for emergency exit, marking the floor with Florence point with direction so that the trapped public during fire very easily follow the line to get out of the exit and emergency exit. Proper direction boards are very important. Loading and unloading facilities. In a museum, facilities should be provided for the loading and unloading for objects in the museum. The museum building should have provision for large entrance ramps, provision of board and heavy lifts, etc. Equipment such as burros, forklift, hydraulic cranes, etc. Depending upon the financial position and staff available in the museum. Visitor accessibility.
The last topic is visitors accessibility. Museum is a public institution and therefore should be physically accessible to all its audience members, irrespective of their हाँ बताएं, आपका हो गया क्या या आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया? लगता है इंटरनेट आपका लूज हो गया है। जी जी इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगी इंटरनेट की। हेलो सर। हाँ जूही, आपका ठीक, हम फोन भी डाल रहे थे आपको, तो कोई बात नहीं, आप आ गए। आपको अभी बस हमको लगता है कि लास्ट पढ़ना होगा आपके जो आप पढ़ रहे थे। डिस्कनेक्ट हो गया लास्ट। सर लास्ट आपने कहाँ तक सुना था, बता दीजिए। वाह, कहानी कहने वाला ये बताए सर, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था तो सर होने थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, पता चला डिस्कनेक्ट। हाँ तो आप कहाँ पढ़ रही थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपने जो है, एक सेकंड रुकिए, हमारे आपने विजिटर एक्सेसिबिलिटी पढ़ लिया है? विजिटर एक्सेसिबिलिटी? नो सर, ये लास्ट था। हाँ तो यही विजिटर एक्सेसिबिलिटी फिर से पढ़ लीजिए, ये आपका लास्ट सेक्शन है। म्यूजियम इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड देयरफॉर शुड बी। थोड़ा स्मार्टली पढ़िए, आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कक्षा 5 का बच्चा जो है हिंदी पढ़ना सीखा है अभी और धीरे धीरे हिंदी पढ़ रहा है। जब देख के ही पढ़ना है तो थोड़ा बोल्ड होकर के पढ़िए और लगे कि हाँ पढ़ रही हैं। कोई बात नहीं, अभ्यास से होगा। चलिए पढ़िए। The last topic is visitor accessibility. Museum is a public institution and therefore should be physically accessible to all its audience members, irrespective of their inherent physical disability, if any. There should be provision like a ramp at the entrance. Lift the floor should be even so that the wheelchairs can be taken inside the museum galleries without any difficulties.
Provisions may also be made to touch and feel the objects in the museums for the usually challenged with the labels in braille scripts for them is also very beneficial. Thank you. ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन अंत तक पढ़ दिया। मैं आपसे एक गार्जियन और टीचर के रूप में पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि आपने अपने 2 प्रेजेंटेशंस तो टाइप्ड दिए हैं, टाइप्ड या इंटरनेट से उसको कॉपी और पेस्ट किया है, और 2 प्रेजेंटेशन आपने हाथ से लिख करके दिया है। जो हाथ से लिख करके दिया है वो बड़ा मेहनत किया है आपने, फिर बाद में आपको ऐसा क्यों लगा कि अब इसको कॉपी पेस्ट करके ही दे दिया जाए? सर, जो 2 प्रेजेंटेशन मैंने दिया था, असाइनमेंट जो दिया है उसके वो हिस्ट्री से रिलेटेड था, तो उसके कंटेंट्स मेरे पास थे, बुक्स वगैरह, तो इसके लिए मैंने उससे पूरा रिसर्च वगैरह करके अच्छे से बनाया था। बाकी जो म्यूजियम और टूरिज्म वाला है तो उसमें मैंने कभी टूरिज्म पढ़ा नहीं है, तो उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है ज्यादा, और मतलब तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई क्लास नहीं होती, तो मुझे बेसिक नॉलेज बहुत कम है उसके बारे में। तो मैंने इंटरनेट से ही जो भी कंटेंट, जो भी चीजें ली इंटरनेट से लिया, और जिस टाइम मैंने आपको सबमिट किया था तो मेरे जो घर में सिचुएशन सही नहीं थी, मैंने मतलब अपने कुछ क्लासमेट्स को भी इसके बारे में बताया था, तो इसके लिए मेरे पास मतलब उसको लिखने का वो नहीं था, तो इसके वजह से मैंने बस उसे कॉपी पेस्ट करके दे दिया था। इसलिए मैं आपके इस ईमानदारी पर, ये 50 नंबर का असाइनमेंट है, उसमें बहुत अच्छे नंबर दूंगा। आपने ईमानदारी से बात को कहा कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ठीक बात है, लेकिन क्या आपने कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको फिर समझ में भी आया कि आपने क्या लिखा है म्यूजियम के बारे में? समझ गई आप? कहाँ तक अंग्रेजी पढ़ी है? जी सर, जी सर, उसके बाद मैंने जब भी प्रेजेंटेशन मुझे देना था तो मैंने उसको दोबारा से रीड किया था, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं पाया था तो उस टाइम पे, तो इसलिए मुझे मतलब थोड़ा इतना आइडिया है कि मतलब म्यूजियम बिल्डिंग के बारे में क्या क्या मतलब बताया गया है, और किस चीज के लिए कुछ जो वर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स है वो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने मथुरा आर्ट के बारे में, मथुरा आर्ट के बारे में बहुत अच्छा लिखा है अपने प्रेजेंटेशन में, तो उसके बारे में इतना अच्छा कैसे लिख पाई? क्या वो आपका बीए वगैरह में विषय था क्या? सर, मैंने AIC इन आर्कियोलॉजी से पीजी किया है। आपने आर्कियोलॉजी से पीजी किया है? नहीं, यस सर। कहाँ से? BHU से? कहाँ से किया है? यस सर, BHU फैकल्टी, AIC इन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन फ्रंट ऑफ सोशल डिपार्टमेंट। सर, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। बताइए। जूही जो है विनय सर से पढ़ चुकी हैं, इन्हीं के डिपार्टमेंट की स्टूडेंट रही हैं। नहीं, वो तो हम जान गए भैया, जब ये कहीं तो हम जान गए लेकिन आपने मुझे बताया तो मुझे अच्छा भी लगा। मैं विनय जी को जान रहा हूँ और आर्किटेक्चर के लोगों को, बहुत से लोगों को जान रहा हूँ, तो इन्होंने जानते हैं सर। हाँ, तो और दूसरी बात ये सर कि मेरा मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट पहले से ही था, तो इसके लिए मैं मतलब उसके बारे में हमेशा कुछ न कुछ पढ़ती रहती हूँ, तो इसके लिए उसमें मेरा कमांड थोड़ा ठीक है बाकी सब्जेक्ट के अपेक्षा। ये बताइए कि आपने विदुला जायसवाल को देखा है? विदुला जायसवाल आपके यहाँ नाम सुना है? नाम सुना है पर उनको मतलब देखा नहीं, क्योंकि जिस टाइम मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम वो शायद नहीं थी वहाँ पे। हाँ, वो रिटायर हो गई थी, लेकिन ये बात ठीक कहा आपने। तो डिपार्टमेंट आप क्लास करने जाती थी एमए का? यस सर। तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप अपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के आर्किटेक्चर पढ़ाने वाले, आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स का नाम बताइए।
जी सर, आर्ट और आर्किटेक्चर अर्चना शर्मा मैम एंड अर्पिता चटर्जी मैम पढ़ाती थी। उसके बाद विनय सर थे और सुजाता गौतम मैम थी, ये लोग। और उसके बाद सचिन तिवारी सर है, वो आर्कियोलॉजी और आर्ट दोनों पढ़ाते थे। अच्छा, ठीक बात है। मतलब ये जो वरिष्ठ लोग थे वहां पर, चूंकि वो लोग रिटायर्ड हो गए थे या एमिनेंट प्रोफेसर वहां रहे और उन्होंने उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ आपका, कोई बात नहीं है, तो ठीक बात है। तो ये बताइए कि आपने जो है वह कोई अपना प्रेजेंटेशन, आपने क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी किया है? आपने अपने जो चारों प्रेजेंटेशन हो, ये तो इसमें तो नहीं किया, इसके पहले वाले प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड होगा दिखाया, अभी कुमारी भारती ने दिखाया, आपने दिखाया था? नहीं सर, क्योंकि मैंने पहले प्रेजेंटेशन में मतलब आपने पूछा था तो मैंने बताया था कि मेरे पास मतलब तो कुछ अवेलेबल, ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि 2 लैपटॉप वगैरह, ये अभी मैं खराब है मेरा लैपटॉप, तो इस वजह से मैंने तो कोई बात नहीं। तो इसमें आप हमारे जो इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर आलोक जी हैं, उनकी मदद ले सकती थी आप अपने स्लाइड्स जो वहां भेज देती और वो आपका लेक्चर चलता और वो प्रेजेंट कर देते। ठीक है, हम लोगों के साथ एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ एक बहुत योग्य व्यक्ति हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आलोक जी, जो ऑलरेडी बीटेक हैं। जी सर, इसमें कोई शक नहीं है जी, तो उनकी मदद आपको लेना चाहिए था। तो अच्छा, अब ये बताइए कि अगर आपने म्यूजियम, आपके हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के बगल में ही वो भारत कला भवन है, म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट एक होता है, एम म्यूज कहते हैं लोग, मास्टर ऑफ म्यूजियोलॉजी, आपने उनका क्लास किया होगा। डॉक्टर क्या नाम है, हमारी स्टूडेंट रही हैं अमेरिका से जो बोलते हैं, डॉक्टर त्रिपाठी हैं, क्या नाम है? प्रियंका त्रिपाठी। प्रियंका मैम। हाँ, प्रियंका मैम ने हमारे अंडर में पीएचडी किया है, हिस्ट्री से भी एंशिएंट से एमए किया है और फिर उन्होंने म्यूजियोलॉजी से भी एमए किया है। म्यूजियोलॉजी बने जो ये आपका म्यूजियम वगैरह होता है। यस सर। जी, तो मैं ये कह रहा था, बगल में भारत कला भवन था, कभी भारत कला भवन गई थी आप अंदर? यस सर, अंदर गए, ठीक बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर मान लीजिए आपको ये माना जाए कि आप हमारी मैंने हमारी क्या मतलब सभी स्टूडेंट्स को आप क्लास दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब आपको म्यूजियम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे म्यूजियम के बारे में? हम ही लोग ना पूछें, आप भी पूछिए। हमारे क्लास में अभी इसलिए बहुत कम लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप कोई प्रश्न पूछिए। क्या है कि जो प्रश्न कोई पूछना जानता है तो इसके माने हो कि उसको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी हुई। अब इतना सब होने के बावजूद आपने जावा मधुर का क्लास तो किया ही होगा, बोलिए। कोई प्रश्न पूछिए आप। जी सर, किया है। तो आप कोई म्यूजियम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछिए। जी सर, म्यूजियम तो अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, फिर भी मैं मतलब पूछ सकती हूँ। जैसे कि म्यूजियम की बात आती है तो अगर बेसिकली उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो म्यूजियम के बारे में, तो कितने टाइप के म्यूजियम होते हैं बेसिकली, और वो किस बेसिस पे होते हैं? अगर कोई क्लास का स्टूडेंट का रिप्लाई कर सकता है तो। जी, बहुत सही सवाल पूछा। और क्वेश्चंस पूछिए। बहुत अच्छा, इससे लग रहा है कि आपने पढ़ाई किया है। और बताइए, और सवाल पूछिए। सेकंड क्वेश्चन ये सर कि जो जैसे कि हम लोग क्या सारनाथ है तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हेरिटेज प्लेसेस में आएगा, तो वहाँ पे जो म्यूजियम है, तो म्यूजियम के जब हम लोग एंटर करते हैं तो उसके एंट्रेंस पे सबसे पहले हम लोग को क्या देखने को मिलता है? कौन सा मॉन्यूमेंट या कल्चर देखने को मिलता है? ठीक बात है। मतलब ये कर रहा हूँ कि मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा था कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय को समझता है तो उस पर प्रश्न पूछ सकता है। आपने अच्छे से प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। और आपका कहाँ लोकेशन है, कहाँ पर है आप इस समय?
बनारस में सर। बनारस में। बनारस में कहाँ है? सिगरा। सिगरा। तो ठीक है, फिर बहुत अच्छे आपने प्रेजेंटेशंस किए, मैं आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ और आपको कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और मेहनत किया, एक नया विषय था उसके बारे में परिश्रम किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आज का ये प्रेजेंटेशन का काम समाप्त करता हूँ। आलोक जी अभी कुछ एक लोग नहीं किए हैं प्रेजेंट, वो फिर हमको बोलेंगे, तो बोलेंगे। मैं सोचता था कि थोड़ा इसमें गैप दे दिया जाए 2 अगस्त तक, लेकिन अगर वो लोग बोलेंगे तो उनका प्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग ज्वाइन किए आज के क्लास में, उज्जवल ज्वाइन किए, दीपेंद्र ज्वाइन किए और कुमारी भारती और भारती जी, ऐश्वर्या गुप्ता और सर एक क्वेश्चन था, मतलब हाँ बताइए जूही। जो सर टीचमेंट पे जो फीडबैक है उसमें मैंने मतलब ये तीसरा प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन एक मैंने बुद्धिज्म पर भी प्रेजेंटेशन दे दिया है, लेकिन उसमें मेरा बस मथुरा के जो आर्ट के बारे में जो दिया था वही फीडबैक में शो कर रहा था। तो कोई बात नहीं, आपने आज हमको बता दिया ना कि आपने प्रेजेंटेशन दिया है और मैंने देख भी लिया, आपसे पूछ भी लिया। कई बार ह्यूमन एरर में नहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि मैंने आपका सब प्रेजेंटेशन देख लिया, इसीलिए मैं बताया कि आपने 2 हाथ से लिखा है, 2 ऐसे दिया है, तो आपका सब प्रेजेंटेशन माना जाएगा कि आपने सब प्रेजेंटेशन दिया है। तो आप चिंतित जरा भी न होइए। और मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप पढ़िए और कुछ नहीं, अब नहीं चाहिए। बस मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि पढ़िए और कोई प्रश्न बने तो उसको पूछिए अपने दोस्तों से, अपने साथ के बच्चों से, अपने टीचर से, हम लोगों से। और अगर किसी पेपर को किसी टॉपिक पर आपको पेपर पढ़ने की जरूरत है, जैसे बहुत से पेपर्स हैं, तो आलोक जी से आप बात करिए, वो आपको बहुत अच्छे से पेपर्स किसी भी टॉपिक पर आपको दे देंगे, क्योंकि बीएचयू में बड़ी सुविधा है पेपर्स वगैरह। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उज्जवल, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है सर जी। टीचमेंट पे जो फीडबैक आया है सिर्फ एक ही का है, बाकी ऐसे जो हमने असाइनमेंट दिया है वो लेक्चर में भी अपलोड है सर। तो कोई बात नहीं, हम चूंकि आपको देख भी रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मिस हो जाता है, वहां पर हम किसी एक कागज पर लिखते हैं, बाद में उसको नोट करके बताते हैं जी। तो ऐसे लेक्चर में भी अपलोड है सर मेरा असाइनमेंट। हाँ, आप न चिंतित हुए, क्योंकि मैं आपको लगातार देख रहा हूँ कि आप एकदम बहुत ही सिंसियर क्लास करने वाले विद्यार्थी हैं, तो इसलिए जरा भी चिंतित मत होइए। और फिर अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। सादर प्रणाम सर।